Hello bachcho, I hope you're doing well. So the question we are going to do is evaluate this determinant. Okay, so हमें क्या दिया हुआ है? Let delta be equal to this determinant का value, which is cos alpha, cos beta, cos alpha, sin beta, minus sin alpha, minus sin beta, cos beta, 0. Sin alpha, cos beta, sin alpha, sin beta, and cos alpha. ओके अब हमें क्या करना है, हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. सो दैट इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो. फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करेंगे, क्या बचा ये चार. सो आई गॉट cos बीटा 0, sin अल्फा sin बीटा एंड cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin बीटा into determinant of first row second column eliminate करेंगे. So I got minus sin beta 0, minus sin beta 0, sin alpha cos beta, sin alpha cos beta and cos alpha plus minus sin alpha into determinant of first row third column eliminate करेंगे. So I got minus sin beta cos beta, sin alpha cos beta and sin alpha sin beta. That is equal to cos alpha cos beta into cos alpha into cos beta minus 0 into anything 0 minus sin beta cos alpha into minus sin beta into cos alpha. So that gives me minus sin beta cos alpha into 0 in minus 0 into anything is 0 plus minus minus sin alpha into minus sin beta into sin alpha sin beta gives me sin square alpha and sin alpha and sin square beta and a minus का sign. So I got minus sin alpha sin square beta minus, अब ये cos beta will be multiplied by sin alpha cos beta and that will give me cos square beta. So that is sin alpha cos square beta. Okay. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेट्स ओपन दिस अप. सो ये क्या हो जाएगा, cos alpha cos beta cos alpha cos beta. So that would be cos square alpha cos square beta minus 0 minus sin beta cos alpha cos alpha. So sin square beta cos square alpha and minus minus will give me plus. So that is sin square beta cos square alpha. Next, anything multiplied by 0 is 0. Next, minus sin alpha into minus sin alpha sin square beta. Sin square alpha हो जाएगा, minus minus plus. So I got plus sin square alpha sin square beta. And then minus minus plus. Again, I got sin alpha into sin alpha sin square alpha and cos square beta. Okay. अब next क्या करेंगे? Let me first write this entire thing again. So first term is cos square alpha cos square beta. So I got cos square alpha cos square beta. Next, plus sin square beta cos square alpha. Sin square beta cos square alpha plus sin square alpha sin square beta. Sin square alpha sin square beta plus sin square alpha cos square beta. Sin square alpha cos square beta. ओके, ये हमने चारों टर्म्स दोबारा लिख लिया. नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम कुछ तो कॉमन निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर अल्फा
cos square alpha, तो वो कॉमन निकल सकता है. So that is gonna give me cos square alpha into क्या क्या बचा, यहाँ पे cos square alpha निकल गया तो बचा cos square beta प्लस यहाँ से cos square alpha निकल गया तो sin square beta. अब नेक्स्ट इन दोनों टर्म से क्या कॉमन निकल सकता है, sin square alpha. So plus sin square alpha is gonna get out and क्या बचेगा, sin square beta प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, cos square beta. ये क्या है, cos square beta plus sin square beta 1 and sin square beta plus cos square beta 1. So this is gonna give me cos square alpha into 1 plus sin square alpha into 1. Reason, sin square beta plus cos square beta is gonna give me 1. This is equal to cos square alpha plus sin square alpha. Now that is equal to 1. Reason, sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1. तो हमें ये पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिला, 1. That concludes our answer. I hope you understood. Thank you.